Last week we have done with the basic examples. For example, I told you simple Java program. Okay, welcome to Java. This was the first program. Second program I told you simple addition, subtraction, multiplication. Then okay, create two classes. One is for area and second is area main. Then we have done with the student mark sheet program. Then fifth one was that logic and main logic program. So those who all are new, please guys go through the videos. Even I will repeat, don't worry. I will take the lecture for new students. Okay, I will repeat all these programs. Okay, and then I told you one program related to the employee basic program, setters and a getters program. Correct. Okay, so I'll repeat this once again because some people are having doubts here. So I will repeat this program once again. And after this program, we'll complete the array here in this week. And again, we'll start with OOPS concepts and some real-time applications. OOPS concept with some real-time applications. Okay, fine. So guys, remember one thing, whatever the scenarios, code are very important. Okay, as I said in the previous batch also, one of my students, she got placement today. She told me that, sir, they asked me the scenarios. They asked me scenario like polymorphism. Tell me how you will implement the polymorphism. Tell me where you will implement the user-defined exception and type the code also. So based on that, she is able to clear one interview. She got 9.5 lakhs का package. ठीक है? So and it was like first interview only. ठीक है? तो वही मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि याद रखो, सिनेरियो को भी याद रखो, पॉलीमॉर्फिज्म को भी याद रखो, इसको लिखना कैसे ये भी याद रखो. So this is very important. How to write the polymorphism? What is the polymorphism? Okay. So let's continue with this application once again. ये वाला जो मैंने बताया था. तो देखो कि अगर तुम लोगों को कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है तो उसको कैसे लिखा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं आई विल डू वन थिंग टुडे और मे बी टुमारो इवनिंग आई विल अरेंज वन सेशन. तो वो तुम्हें मतलब ऐसे जो लोग प्लेस होते हैं ना उनका मैं सेशन रखता हूँ तो तुम्हें कुछ हेल्प मिलता है. ठीक है, तो आई विल अरेंज वन सेशन. तो शी विल एक्सप्लेन यू कि क्या क्या पूछा, कैसे उसने इंटरव्यू क्लियर किया. ठीक है, ओके. So today or tomorrow evening I will plan. Okay, yeah. तो देखो ये अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइल न्यू, create a Java project here and application, suppose this is application 6 here, application 6 over here. Okay, right click, new and create a class. जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि यू कैन क्रिएट, टेक एग्जांपल, यू कैन क्रिएट अ क्लास ऑफ एम्प्लॉई. जब हम एम्प्लॉई बोलते हैं, व्हेन वी आर सेइंग अ वर्ड एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई का मतलब क्या क्या होता है कि तुम्हारे सामने इमीडिएटली आना चाहिए कि सर व्हेन यू सेड एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई का मतलब होता है प्राइवेट में इंटीजर एम्प्लॉई का आईडी, देन प्राइवेट में हियर स्ट्रिंग एम्प्लॉय का नेम, प्राइवेट डबल एम्प्लॉय का सैलरी. ओके ओके, सो हियर आई वांट टू, दिस इज अ प्राइवेट हियर. ठीक है, तो ये सारा डेटा प्राइवेट होता है. ये प्राइवेट क्यों लिखते हैं बेसिकली, लिसन, कि जैसे मैंने बोला कि प्रोग्रामिंग को जब तुम सीखते हो, सो ऑलवेज कंपेयर योर प्रोग्रामिंग with the real time. Don't compare programming. जैसे कि बहुत लोग ऐसे समझ में आता है, जब मैं तुम्हें पूछता हूँ ना क्लास मतलब क्या, तो इमीडिएटली तुम्हारे सामने तुम्हारा बालगुरु स्वामी का बुक याद आता है. उस बालगुरु स्वामी के बुक में जो लाइन नंबर लिखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 10 पे यहाँ पे डेफिनेशन लिखा था, क्लास मतलब क्या. ओके, सो ऐसे वहां पे लिखते हैं नॉर्मली. सो डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग. जब तुम्हें किसी ने पूछा कि कैन यू टेल मी व्हाट इज अ क्लास, तो क्लास का मतलब तुम्हारे सामने समझ में आना चाहिए ये कि क्लास मतलब सर कार इज अ क्लास, एनिमल इज अ क्लास, ओके, ह्यूमन इज अ क्लास.
तो ये जो वर्ड्स है ये सारे वर्ड्स हो गए तुम्हारे क्लासेस। इस वर्ड का मतलब होता है क्लासेस। इफ somebody asks you कि टेल मी द ऑब्जेक्ट मतलब क्या, तुम बोलोगे कि कार इज अ क्लास, तो मारुति स्विफ्ट इज अ ऑब्जेक्ट, मारुति ब्रीजा इज अ ऑब्जेक्ट, ओके, मर्सिडीज इज द ऑब्जेक्ट, ये हो गए उसके ऑब्जेक्ट्स। तो कभी भी इन कंसेप्ट को रियल टाइम के साथ कंपेयर करो। क्यों? बिकॉज यू आर गोइंग टू डेवलप द सॉफ्टवेयर फॉर द रियल टाइम इंडस्ट्री। कल जाके अगर तुम्हें किसी ने पूछा कि तुम्हें ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई तुम्हें पूछा कि तुम्हें मेडिसिन के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई तुम्हें पूछा कि तुम्हें ग्रोसरी स्टोर के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो तुम्हें ये इंफॉर्मेशन मालूम होना ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट कि ग्रोसरी के स्टोर में व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज आर अवेलेबल। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग। This is called as requirement gathering, and first you should know the requirement properly. So when I said I want to develop application for the employee, so employee has ID, name and salary. Any employee has ID, employee name and employee salary. तो इसको प्राइवेट क्यों लिखते हैं? क्योंकि कार को इंजन होता है, कार को क्या होता है, हॉर्स पावर हम बोलते हैं उसको, ठीक है, कार का पेट्रोल टैंक होता है, कार को हॉर्न होता है, ये सारी चीजें इनकैप्सुलेट होती है दैट यू कैन नॉट चेक फ्रॉम द आउटसाइड द वर्ल्ड, यू कैन नॉट व्यू फ्रॉम द आउटसाइड द वर्ल्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पज। तो कार एक क्लास है, एम्प्लॉय एक क्लास है, कार का इंजन है, तो मैं कार का भी सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ। आई कैन क्रिएट अ कार सॉफ्टवेयर, तो देयर इज माई इंजन इज अ प्राइवेट, ओके, नंबर ऑफ गियर्स इज अ प्राइवेट, ओके। तो ये वेरिएबल कभी भी प्राइवेट रहते हैं, याद रखो। और इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। Instance variable. What is the meaning of instance? If I say car is a class and Maruti is the instance, Samsung is a class and Samsung का मोबाइल suppose A1 सीरीज का कोई मोबाइल है, that is called as the instance. Laptop is a class and Dell का कोई वर्जन होगा, that is called as the object. Lenovo का कोई ऑब्जेक्ट, Acer का कोई ऑब्जेक्ट, HP का ऑब्जेक्ट. So understand here employee is a class and ये उसके फीचर्स है, ये उसके कौन है, फीचर्स है, याद रखो। एंड दिस फीचर्स आर नथिंग बट द एट्रीब्यूट्स, ओके। चलो इसको राइट क्लिक करो, इसको वैल्यू सेट करने के लिए गो टू सोर्स, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, सिलेक्ट ऑल, क्लिक ओके। ये देखो हियर यू हैव अ क्लास, क्लास के अंदर वेरिएबल लिखो एंड यू शुड हैव द गेटर्स एंड सेटर्स, गेटर्स एंड सेटर्स। तो गेटर का काम होता है इसको वैल्यू को बाहर रिटर्न करना क्योंकि ये प्राइवेट है, सेटर का काम होता है इसको वैल्यू सेट करना। तो ये दो इंपॉर्टेंट मेथड है, एक होता है सेट मेथड, एक होता है गेट मेथड। सेट मेथड का काम है प्राइवेट के वैल्यू को बाहर रिटर्न करे और गेट का सेट का काम होता है कि इसको वैल्यू सेट करे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। As I told you, in your mobile there is a speaker. To increase the volume or to decrease the volume, you have a public button. So this is increase value, this is a get decrease the value. Suppose, okay, तो डेटा जो होता है वो प्राइवेट होता है, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए कुछ पब्लिक मेथड्स होते हैं। जब व्हेन यू हैव अ प्राइवेट डेटा, इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। दिस इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन, हाइडिंग द डिटेल फ्रॉम आउटसाइड द वर्ड। तनया, listen this, you know, this is called as the encapsulation. Encapsulation means what? Hiding the detail from outside the word. ये जो प्राइवेट होता है ना तनया, इसको तुम इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक ही यूज कर सकते हो। यू कैनॉट यूज दैट आउटसाइड द क्लास। एज आई सेड, हम लोग जब बोलते हैं मेरे कार में जो इंजन है वो मैं दूसरे के कार में बिठा सकता हूँ क्या, बताओ मुझे। इफ आई सेड आई हैव माई कार, इन माई कार देयर इज वन इंजन, कैन आई रिमूव द इंजन फ्रॉम माई कार एंड कैन आई पुट इन द अनदर कार? इज इट पॉसिबल? टेल मी। ओके, तो ये हो गया इनकैप्सुलेशन, हाइडिंग द डिटेल्स। बट इंजन को मैं एक्सेस कर रहा हूँ कि नहीं कार के अंदर, बताओ तो मुझे। मेरे कार में इंजन है बट मैं इंजन को एक्सेस कर पा रहा हूँ क्या नहीं, टेल मी। yes or no, tell me, I have an engine in my car, am I can tell me how I am accessing that engine? तुम बोलो, म्हणजे कार मध्ये जे इंजिन आहे ते आपण कसं काय ऍक्सेस करतोय सांगा तर मला। कार मध्ये एक इंजिन आहे, ते इंजिन आपण कसं ऍक्सेस करतोय, यू टेल मी हाऊ टू ऍक्सेस दॅट इंजिन। आपल्या कार मध्ये इंजिन आहे, बरोबर आहे, मग ते इंजिनला आपण ऍक्सेस करतोय का नाही, दॅट इज माय क्वेश्चन।
नाही, कसं ऍक्सेस करतोय? टेल मी द आन्सर. हाऊ टू ऍक्सेस दॅट इंजिन? प्रॉपर मेकॅनिझम म्हणजे काय? पण आता कारमध्ये सेट अँड गेट मेथड आहेत का कोमोलिका? रिअल टाइम मध्ये यार, टेक्निकल नाही जायचं पूर्ण. बाय एक्सटर्नल फीचर्स मीन्स व्हॉट चिन्मयी? Yeah, that's right, Namrata. There is a start button in a car. There is a start button in a car. This is the correct answer. What she said here, ki there is a start button. When you press that button, you are accessing the engine. When you press the start button, you are accessing that engine. Are you getting me? Everybody tell me. When you press the start button, you are accessing the engine of your car. When you change the gear, you are accessing the engine of your car. Am I right? When you change the gear, you are accessing the engine of your car. Yes or no? Okay, so when you press the, listen, when you press the brake or okay, when you are accessing the tire over there. When you press the brake, you are accessing the tire. Okay, so the point is that कि ये मेरा कार का इंजन है, इसको स्टार्ट करने के लिए ये एक बटन है, इसको स्टॉप करने के लिए एक बटन है. तुम्हारे मोबाइल के अंदर कैमरा है, उसका फोटो लेने के लिए देयर इज अ फंक्शन. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि डेटा कभी भी प्राइवेट होता है. योर डेटा इज अ प्राइवेट, अंडरस्टूड, एंड टू एक्सेस दैट यू हैव अ फंक्शन. तुम लोग ना कंपेयर नहीं कर पाते रियल टाइम से. तुम्हारे घर में एसी होगा, तुम्हारे घर में टीवी होगा, तो उस टीवी के अंदर चीजें सब प्राइवेट है. उसको एक्सेस करने के लिए तुम्हारे पास रिमोट है और तुम पूछते हो रिमोट में कौन सा फंक्शन है. यहाँ पे तुम्हें फंक्शन समझ में आता है, दैट इज सेटर गेटर मेथड ओनली. बट तुम्हें प्रोग्रामिंग में सेटर गेटर नहीं समझ में आता. यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तुम बोलोगे अरे हमारे पास वॉशिंग मशीन है, हमारे घर में फ्रीज है, उसको उन्होंने एक बोर्ड दिया है, उस बोर्ड के ऊपर सारे फंक्शंस है, एंड दैट फंक्शंस आर एक्सेसिंग द इंजन विच इज द प्राइवेट पार्ट्स. अंडरस्टूड? So same thing is over here. When you have a class, your class has some private variable, and to access the value and to set the value, we have a private. You have some public method. So let's set the value here. Right click here. इसका और भी एडवांटेज है, मैं बताऊंगा तुम्हें, डोंट वरी. न्यू and create a class here. Employee main. Okay, देखो क्या करना है. Here you can come to this class, type employee here, employee object 1 is equal to new employee. तो ये होता है ऑब्जेक्ट जावा में. ओके, तो अगर C++ से कंपेयर करोगे तो हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, इस तरीके से, एम्प्लॉई ई ओबीजे. सो C++ object of employee class. Okay, here is the way. Okay, Java object of employee class. अगर पाइथन में आओगे तो भी ऐसे ही लिखेंगे, स्टार्टिंग में डायरेक्टली EMP लिखते हैं और एम्प्लॉय लिख देते. दैट्स इट, एम्प्लॉई, दैट्स इट, बस इतना लिख दो. तो ये सिंटैक्स हो गया पाइथन का. पाइथन ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉई क्लास. तो ये देखो, एवरी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड द ऑब्जेक्ट. ये C++ का हो गया, ये पाइथन का हो गया, ये जावा का हो गया. दैट्स इट. तो ऑब्जेक्ट होता है मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे पास जो वेरिएबल्स है, यहाँ पे यू हैव सर्टन वेरिएबल्स हियर. ये देखो, ये मेरे वेरिएबल्स ने एक मेमोरी एलोकेट कर दिया. ओके, जिसके अंदर मुझे डेटा मिलेगा. यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का सैलरी. और इनको एक्सेस करने के लिए वी हैव अ पब्लिक मेथड्स हियर. ये देखो, ये पब्लिक गेटवे है. इसका कलर चेंज करता हूं मेरे को. ये मेरे पब्लिक मेथड्स है 1, 2 और एक होगा 3. ऐसे 3 मेथड है मेरे पास. जो मीडिएटर है बिटवीन दिस डेटा, ये जो डेटा है ना मेरे पास यहाँ पे, सी दिस डेटा, दिस इज अ प्राइवेट डेटा ऑफ अ क्लास. इस प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए वी हैव अ सर्टेन मेथड्स.
these are the methods here. तो ये हो गए मेरे setters and getter methods. Setters and getter methods. Setters and getter method. तो ये जो प्राइवेट डेटा है इसको एक्सेस करने के लिए you have setters and you have a getter method. ठीक है, इसको एक्सेस करने के लिए you have the setters and a getter method. Remember this. ओके, तो ये जो मेथड है ना, ये है मेरे एक सेटर गेटर मेथड. तो ये मेथड क्या काम करेंगे, ये सपोज एग्जांपल लो, इस मेथड का नाम है गेट आईडी. गेट एम्प्लॉय आईडी मतलब ये होगा गेट सैलरी वाला मेथड. ओके, तो whenever I want the data I will call this method. Whenever I want to set data I will call the method. For example set salary method, ये वाला मेथड रहेगा जो कि डेटा इसको सेट करेगा यहाँ पे, और हम लोग बाहर से इनको कॉल करेंगे. जैसे यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट दिस साइड, एम्प्लॉई ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई. यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं तब यहाँ पे दो टाइप की मेमोरी होती है. वन इज द स्टैक मेमोरी एंड सेकेंडली द हीप मेमोरी. अभी ये मेमोरी क्या होता है दैट विल डिस्कस इन अपकमिंग सेशन, डोंट वरी. तो स्टैक में तुम्हारा रेफरेंस होता है. रेफरेंस मतलब कौन, ये जो ई मैंने लिखा है ना ये यहाँ पे होगा. एंड दिस ई विल पॉइंट टू दिस एरिया. इस एरिया को ये पॉइंट करता है और इनको एक्सेस करने के लिए ये गेटवे है. अंडरस्टूड एवरीबडी? तो दिस इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन, हाइडिंग डिटेल फ्रॉम आउटसाइड द वर्ड. Hiding detail from outside the word is called as encapsulation. And to access this data you have the public method here. We have a public method over here. Same thing, this is my engine and to access the engine we have the public method here. Look at this. ये engine को access करने के लिए these are my public methods. Everybody understood? Please reply. तो यहाँ से हम जब value set करेंगे, whenever you set the value e dot set employee id. तर लक्षात घ्या आयटी इंडस्ट्रीचे सॉफ्टवेअर सगळीकडे यूज होतात. तुम्ही एखाद्या ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये गेला, इव्हन यू कॅन आस्क युअर पॅरेंट्स ऑल्सो इफ दे आर इन अ डिफरंट इंडस्ट्री. यू कॅन आस्क देम की मे बी इन देअर कंपनी देर इज अ परचेस डिपार्टमेंट अँड दिस पीपल आर युजिंग द सॉफ्टवेअर टू ऑर्डर द डेटा. ओके, मे बी कशाची पण फॅक्टरी असू द्या, त्यांच्याकडे सॉफ्टवेअर असतील, त्या सॉफ्टवेअरमध्ये सगळ्या त्यांच्याकडचे स्पेअर पार्ट असेल, स्क्रू असेल, प्रत्येक गोष्टीचं रेकॉर्ड मेंटेन असेल. आणि त्या स्पेअर पार्ट्सला वगैरे त्याला ऑर्डर करायला देर इज सम सॉफ्टवेअर. So tomorrow maybe you have to develop the software for such a type of client. You have to develop the software for this type of a client. Okay. Okay. So here I will take the data from the user. System.in here. And here you have to say that enter employee ID. You can just write here sc.nextInt. That's my SO. Enter employee name. The object1 dot set employee name. sc.next. Enter employee salary. The object dot set employee. Salary here. sc dot next. Double. So we can set the ID, we can set the name, we can set the salary. And to print this employee ID plus obj1 dot get employee ID, employee name plus obj1 dot get employee name, employee salary, obj dot get employee salary C. So here you can set your data, you can set the ID, you can set the name, you can set the salary. You can get the ID, name and salary. Right click here, run as and application. Enter the ID 101, enter the name. Okay,
and enter the salary here. See, this is data 12, this one and this one. Okay, so this is the way you can set the data, you can get the data. That's it. So in future याचे खूप ऍडव्हान्टेज आहेत, नीट लक्ष द्या. आता कन्सेप्ट समजणं जास्त महत्वाचं आहे. there is no syntax with the next int. ओके, आता कसं असतं माहिती का की इथे नेक्स्ट इंट, कारण की लक्षात घे इथे इंटिजर जो आहे ना तो इंटिजर हा प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप आहे, म्हणून त्यांनी इथे नेक्स्ट इंट लिहिलंय. डबल हा प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप आहे, म्हणजे आपल्याकडे लक्षात घे की वी हॅव 8 डेटा टाइप्स हियर. जावा हॅज 8 primitive data types. And which data types are there in Java? I will tell you, one second. So we have a byte, we have a short, we have int, we have long, then we have float, then we have a double, we have a character. Okay, byte, short, int, long, float, double, and boolean. So total we have 8 data types available in Java. We have 8 data types, but string is not a data type. String is a class. String is a class. Okay, so for byte you have a method here in a scanner class. What is that? Next byte is the method. Small मध्ये लिहा. आता याच्यावरनं तरी शिका, यांनी मेथड कशा लिहिल्यात बघा. नेक्स्ट बाईट, byte, next is a small. इथे तुम्ही बघा next short, then you can write here next integer, next long here. हे बघा, हे छोटे वर्ड्स आणि हा कॅपिटल आहे. मग यांनी असं का केलं? वाय दिस इज स्मॉल अँड दिस इज कॅपिटल? बिकॉज दिस इज अ कोडिंग स्टँडर्ड. This is a coding standard. This is a small and B is a capital. Small and capital, small and capital. These are the coding standards. And string is a class. Therefore, there is only one method which is called as next. Okay, fine. Remember this. For primitive data type, they have this syntax. For the class, they have next method. Okay. Now, for more appropriate code, this is also not the correct code. As I told you, in a suppose main म्हणजे एखाद्या कंपनीचा ओनर आहे, ठीक आहे. मेन इज द हेड ऑफ द ऑर्गनायझेशन. मेन इज द हेड ऑफ द ऑर्गनायझेशन. नाव यू टेल मी, जो कंपनीचा मेन असतो, हेड असेल, तोच काय सगळं काम करेल का? तो ऑर्डर म्हणजे सगळं मॅन्युफॅक्चरिंग पण तोच करेल, पॅकिंग पण तोच करेल, मार्केटिंग पण तोच करेल, असं होईल का? टेल मी. देर इज अ हेड फॉर द कंपनी अँड द कंपनी हेड विल नेव्हर डू ऑल दिस टास्क, राईट? करेक्ट आहे. So he'll arrange the manager. लक्ष द्या मी काय करतोय. I am telling you, maybe it is little bit confusing for you. मी स्वतःहून सांगतोय, थोडंफार कन्फ्युजन होईल, पण 1 किंवा 2 दिवस होईल. रिमेंबर दिस. नंतर त्याचे फायदे खूप होतात. क्लिअर? आता परत एक्झाम्पल घ्या, लाईव्ह एक्झाम्पल. वॅक्सिन घेतली, 1-2 दिवस त्रास होईल, पण नंतर ऍडव्हान्टेज खूप आहे. कळलं का? ओके, रिमेंबर दिस. फाईन. सो दॅट इज व्हॉट आय एम टेलिंग यू, की एखादी चांगली गोष्ट शिकताना थोडंफार सुरुवातीला कन्फ्युजन होतं, पण थोडं पेशन्स ठेवले त्याचं आउटपुट पण चांगलं येतं. क्लिअर? ओके. सो सो टेक एक्झाम्पल हिअर. कारण की काय, कोणी काय म्हणणार की नाही मी एकाच क्लासमध्ये लिहितो तरी तेच आउटपुट येणार, मी 3 क्लास लिहिलं तरी तेच आउटपुट येणार. पण वेन यू राईट युअर कोड इन 3 डिफरंट क्लासेस, दॅट इज फॉर द लॉंग टर्म. ओके, राईट क्लिक हिअर, रन ॲज हिअर अँड क्रिएट अ क्लास. Employee manager. Take an example. Employee manager. So I have here manager class. In the employee manager class, I will take 2 methods. Public void accept, or I can say create an employee. Create an employee. म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंट. पब्लिक व्हॉइड डिस्प्ले एम्प्लॉई म्हणजे मार्केटिंग डिपार्टमेंट. एक्झाम्पल, द रोल ऑफ द मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंट इज कट दिस कोड अँड पेस्ट टू दिस क्लास अँड रिटर्न एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट 1. So the return, आता हे काय करतो मी सांगतो, just wait for some time. You are returning the object here of which class? Employee class.
So this employee class object, you can just write here employee. This employee you are returning over here. Go to the main class, employee obj. बट एक मिनिट असं नाही करायचं, एक मिनिट. आता मेनचं काम काय आहे? What is the job of main? Create a call the manager, hire the manager. I will hire the manager here. Okay, employee manager is equal to new employee manager, and employee manager dot create an employee and employee object. तोच एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट आहे हा, फक्त तो कोणी क्रिएट केला? लास्ट टाइमला तुम्ही इथे क्रिएट केला होता. लास्ट टाइम यू क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट हियर. दिस टाइम आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट इन द एम्प्लॉई दिस क्लास, manager class. Understood? In the previous scenario you created the object here. Look at this. In the previous scenario you created your object here. This object you created in the same class itself right here. Okay, in the last scenario you created an object here, but right now I have hired this person and I told this person you create an object for me and give me the object. Now I am telling another person employee manager dot display employee, and I am asking this person you display the object for me. Cut this, go to display. Go to display here, employee, and paste here. So first of all, employee object is created. Set the value, return this object. Object is written here. Then go to the main. You will get the object here. Then call display. You can pass your object here. You will get the object here and display this data. Maybe little bit confusion. Again, I am telling you. Little bit confusion might be there. Okay, I will repeat again, don't worry. So this method will okay, चला main पासून start करतो. Okay, main ला call केलं. main ने काय सांगितलं? I am calling a manager. Manager will call this method. Go to the create employee method. Go to create employee. Create employee will create an object for me, set the data for me and return my data. Data you can return here. You are going to return eobj. eobj type is employee, therefore return type is employee. eobj type is employee, therefore return type is employee. Come back to the main class. You will get your object here. Line number 13. Pass that object to this place. Display employee. Pass the object here. Then you will get your object here, and the job of this method to display data. Program तोच है. I can do this program with one class, with two class, with three classes. But this is a standard approach. I have hired one manager and this manager will create a job for me and display job for me. Tomorrow I want to delete. I will ask manager, add the method to sort my data. Okay, I will add the method, insert my data, insert a new data. Okay, I will add the data, search the employee here. So no need to add the code in your main class. Tomorrow I am going to add so many methods over here. This is like a utility class. Are you getting me? Please reply. याने मला एम्प्लॉई क्रिएट करून दिला आणि डेटा सेट केला. याने माझ्या एम्प्लॉईला डिस्प्ले केलं. उद्या मी सॉर्ट करेल, सर्च करेल, इन्सर्ट करेल. ओके, सो हे नंतर करू आपण. जस्ट आय एम टेलिंग यू वन एक्झाम्पल की दिस मेथड विल क्रिएट अ एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट, set the data, return this data back to the main class. You will get your object here called display. Then go to the manager here. You will get your object here and display your data. That's it. Okay. चलो इसको रन करते हैं. Tell me which approach is better. You can do this program in one class. You can implement the same program in two class or three class. Tell me which approach is better. Yeah, that's right. For future point of view, definitely this approach is better. Compile a program, a Java application. See, enter the output same. See, this is the same output, no change. This is accept data and this is used to display data. That's it. One is used to accept data and one is used to display data. That's it. ठीक है. So आता पुढे मी करणार आहे काही चेंजेस, मग तुम्हाला समजेल याचा ऍडव्हान्टेज काय आहे.
त्याचे खूप advantage. Remember this. Any questions here, please reply. You can unmute and you can ask me. If you want to ask any question, you can click, there is a button called as raise hand. Click on that and you can ask me your question. So काय केलं? I will repeat here. Please understand the steps once again. We have a class which has the setters and getters method. Why I am creating getter setter? Can you tell me the answer in one line? Why I am creating the setters and getters? Tell me. Why I am creating a getters and setters? Tell me. Very good. To access the private data. That's right, Anjali. To access the private data. Very good. To access the private data of a class, we are using getters and setters. That's right. Okay. So, this is for only one employee. Let's create one more application. Okay, and then we'll create for multiple people. Okay. So here I am creating the application. Suppose 7 here. Take example application 7 for bank. Same application I'm going to create right now. Right click, new, create a class. Account here. Integer, account number, customer name, account balance. Account number, customer name and account balance. Account number, customer name, account balance. Okay. Yeah, that's right. Very good. Yeah. So you have account number, customer name, account balance here. Okay. So right click here, go to source, generate the getters and setters, select all. Okay, select all. But here, instead of getter setter, we have getter setter I will use. But there is one more concept. Okay, if you are from C++ background, there is a concept of constructor. There is a concept of constructor. So what I am doing, I am going to create a constructor here. Look at this. Go to source and generate a constructor. Look at this option here, generate a constructor. Select all, click OK. Here I created a constructor. Okay, remember this. We have private account number, customer name, account balance. Account number, customer name, account balance. Then we have a constructor. इसको बोलते हैं constructor. So what is this constructor? Your class name and constructor name is always same. जो भी क्लास का नाम रहेगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा. इसका क्या यूज है, इसके ऊपर हम लोग पूरा अलग से सेशन लेंगे. डोंट वरी. राइट नाउ जस्ट रिमेंबर कि दिस इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर. तो इसका यूज क्या है बताता हूँ मैं. जस्ट वेट एंड अगेन क्रिएट अ गेटर सेटर्स एज इट इज, लाइक यू नो, like a previous example. Create a getters and setters. How to create a getter setters? यहाँ पे राइट क्लिक करो, बट उसके पहले इस कोड को सेव करो. कंट्रोल एस एंड देन राइट क्लिक. Go to source, generate getters and setters. Select all, click OK. So I got the getters and setters here. ये देखो, ये आ गया get method, ये आ गया set method, ये आ गया get method. This is my set method. ये get method, this is my set method. Okay, so here we have a getter set and setter. Okay, so what is the use of constructor? We'll check just a minute. तो ये this क्या करेगा? This का मतलब होता है कि okay, this का मतलब is that okay, so as I told you कि ये जो private data है, ये जो नाम है यहाँ पे, this name and this name is the same. तो अगर एग्जाम्पल लो, इसका नाम अगर मैंने लिखा होता ABC
और इसका नाम अकाउंट नंबर है, देन नो नीड टू यूज दिस कीवर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर इसका नाम एबीसी है एंड दिस नेम इज अकाउंट नंबर, सो नो नीड टू यूज दिस कीवर्ड। अंडरस्टूड? दिस का मतलब होता है ये ऊपर वाला वेरिएबल, विदाउट दिस मतलब ये वेरिएबल। ठीक है, अगर इन दोनों का नाम अगर अलग रहेगा तो दिस की कोई जरूरत नहीं है। एवरीबडी क्लियर? If we have a different name, then no need to use this keyword. But if there is a same name, if there is a same name, right now, actually there are three use of this keyword. There are three use of this keyword, but I am telling you just first use right now. Okay, there are three use of this keyword, but I am telling you only first use right now. कि अगर ये वेरिएबल होते, इनको क्या बोला जाता है मालूम है? इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इसको हम बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल और इसको हम लोग बोलेंगे पैरामीटर्स। रिमेंबर, इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, इसको बोलते हैं हम लोग पैरामीटर्स। तो अगर इंस्टेंस वेरिएबल का नाम और पैरामीटर का नाम अगर सेम है तो हम लोग यूज करेंगे दिस कीवर्ड। इफ द इंस्टेंस वेरिएबल नेम एंड द पैरामीटर नेम इज द सेम, देन वी आर गोइंग टू यूज दिस कीवर्ड हियर। वी आर गोइंग टू यूज दिस कीवर्ड। ओके, बट अगर नाम अलग है तो कोई जरूरत नहीं है। देखो इसका नाम और इसका नाम सेम है तो मैंने दिस लिखा। दिस मतलब ये देखो हाईलाइट हो गया, और ये मतलब ये हाईलाइट हो गया। लुक एट दिस, इसको सिलेक्ट किया तो ये हाईलाइट हुआ, इसको सिलेक्ट किया तो ये हाईलाइट हुआ। दैट्स इट। इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट होगा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट होगा। अगर यहाँ वाले ये वाले नेम और ये नेम अगर सेम है तो दिस की जरूरत पड़ती है। तो आई विल गो फॉर स्टैंडर्ड ओनली, कि अगर ये इक्लिप्स मुझे ऑटोमेटिक नेम सेम करके दे रहा है तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ रीजन होगा। देखो ये होता है हमारे इंस्टेंस वेरिएबल और ये होता है हमारे पैरामीटर्स। ओके, तो ये भी कौन होगा अपना यहाँ पे दिस वन। ठीक है, और बाकी तो मालूम है। इसको प्रिंट करने के लिए हम इसको प्रिंट करने के लिए गेटर मेथड है। फिर तुम पूछोगे सर अभी सेटर का क्या यूज है, तो बताता हूँ, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। तो इसके लिए राइट क्लिक करो, न्यू करो और मैनेजर को हायर कर दो पहले यहाँ पे अकाउंट मैनेजर। अकाउंट मैनेजर आ गया। अकाउंट मैनेजर का काम क्या है? पब्लिक वॉइड क्रिएट अकाउंट। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है कि एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट acc इज इक्वल टू न्यू अकाउंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अकाउंट नंबर, कस्टमर का नेम देना पड़ेगा यहाँ पे, एंड अकाउंट का बैलेंस दे दो 1000 रुपीज। तो ये जो तीन वैल्यू मैंने पास कर दिए, ये जो वैल्यूज है इसको कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करो तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 और 3। कंट्रोल प्रेस करने से नहीं आएंगे, वो ऑटोमेटिकली आते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू द फ्लो कि दिस वैल्यू और दिस वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि जब तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, इसका मतलब जब ये मेमोरी अलोकेट हो रहा है, देखो सेटर मतलब क्या? मेमोरी अलोकेट हो गया, उसके बाद तुमने वैल्यू दिया। बट अभी आर्ग्यूमेंट करते हैं मतलब क्या कि तुम लोग जैसे ही मेमोरी अलोकेट कर रहे हो तभी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो। अभी इसका मतलब कैसे बनो? चलो सबसे अपना बेस्ट एग्जांपल राइट नाउ जो भी मैं बता रहा था। ठीक है, अभी क्या हो रहा है फिलहाल कि चलो कॉलेज तुम्हारा स्टार्ट हो गया। कॉलेज ने बोला कि नहीं, हम लोग सारे जो सेफ्टी के रूल है, ओके, एज पर द कोविड नॉर्म्स हम लोग फॉलो करेंगे कि जब स्टूडेंट कॉलेज रूम क्लासरूम में एंटर करेगा तो उसको सैनिटाइजर दो, उसका टेम्परेचर चेक करो। तो ये हो गई चीजें ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्टर। समझ में आ रहा है? ये जब मेमोरी एक स्टूडेंट अंदर जा रहा है, उसका मेमोरी अलोकेट हो रहा है, तब उसको वैल्यू दे दिया, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। अगर क्लासरूम में बैठ गया और उसके बाद हम लोग उसको वैल्यू दे रहे तो ये हो गया सेटर मेथड। अंडरस्टूड? यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हेन यू एंटर समवेयर यू आर allocating मेमोरी, सो बिफोर दैट यू आर गोइंग टू सेट द डेटा। इसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर। जब बैंक में अकाउंट ओपन करोगे, प्लीज अंडरस्टैंड, बैंक ने बोला कि मिनिमम 1000 रुपए बैलेंस चाहिए, तो ऐसे चलेगा क्या वहां पे कि नहीं हम आप मेरा अकाउंट ओपन कर लो, मैं कल परसों आके 1000 रुपए भर दूंगा? ये चलेगा क्या बताओ? बैंक इज सेइंग कि व्हेन यू ओपन द अकाउंट यू हैव टू सबमिट द 1000 रुपीज।
तो बैंक क्या बोलेगा, ठीक है तुम कल पर से आओ तभी अकाउंट ओपन होगा, है ना। बैंक क्या बोलेगा, यू कैन कम टुमारो देन वील ओपन योर अकाउंट। The point is that when you are going to allocate some memory, and as soon as you allocate memory, you want to set some data, you can go to the constructor, and this data you can set only once. अकाउंट नंबर एक ही बार मिलेगा, नेम एक ही बार सेट होगा, ठीक है। बैलेंस तुमने एक बार दे दिया, उसको बाद में अपडेट करना है, वो कैसे करेंगे, आई विल टेल यू दैट, डोंट वरी। तो इधर से हम लोग रिटर्न करेंगे एसीसी को। तो ये एसीसी मतलब कौन, अकाउंट, यहाँ पे आ गया। बैक टू दी मेन, सॉरी मेन लिखा ही नहीं अभी तक। राइट क्लिक, न्यू एंड क्रिएट अ क्लास हियर, एंड नेम ऑफ द क्लास इज बैंक मेन। इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, बैंक मेन में आ गए। बैंक मेन का काम क्या है देखो, इसका काम है पहले मैनेजर को हायर करो, अकाउंट मैनेजर, अकाउंट मैनेजर इज इक्वल टू न्यू अकाउंट मैनेजर, ये हो गया। इसके बाद am डॉट क्रिएट अकाउंट, ये आ गया, ये मुझे अकाउंट ओपन करके देगा ACC। उसके बाद am डॉट डिस्प्ले, इसको हम लोग ACC पास कर देंगे, गो टू डिस्प्ले। तो यहाँ पे एक डिस्प्ले चाहिए था मुझे, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। तो ये एग्जांपल अच्छे से याद रखो, कल इसके आगे मैं कुछ कंटिन्यू करूंगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। ACC dot get account number plus /t plus ACC dot get customer name plus /n, ये से लिखा तो भी चलेगा। ACC dot get account balance। तो तुम बोलोगे सर आपने अभी कंस्ट्रक्टर लिया तो क्या फायदा हुआ, फायदा यही हुआ कि जब मैंने क्रिएट अकाउंट किया तो मैंने वैल्यू सेट कर दिया, बट अगर फ्यूचर में जाके तुमने बोला कि मुझे अभी बैलेंस अपडेट करना है, तो मैं कैसे अपडेट करूं, विद द हेल्प ऑफ सेटर मेथड। आई एम गोइंग टू डिपॉजिट द अमाउंट और आई एम गोइंग टू विथड्रॉ द अमाउंट। सो हियर आई विल राइट ACC डॉट सेट न्यू बैलेंस, दैट इज 2000, एंड आई कैन चेक माय न्यू बैलेंस हियर। ओके, न्यू बैलेंस इज प्लस ACC डॉट गेट माय न्यू बैलेंस। तो जब तुम अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तब तुम एक बार बैलेंस सेट कर रहे हो, उसके बाद अगर फ्यूचर में तुम्हें फिर से अकाउंट को अपडेट करना है, वी आर यूजिंग सेटर मेथड, एंड टू टेक द डेटा वी आर यूजिंग गेटर मेथड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड यूज ऑफ सेटर एंड गेटर वंस अगेन? व्हाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट यू कैन गो फॉर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के ऊपर हम लोग एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे, डोंट वरी। I will take the separate lecture on a constructor, don't worry. Right now just remember this is called as a constructor, जो कि क्लास का नाम और ये नाम सेम होता है, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसका यूज होता है जब तभी अगर वैल्यू देना है तो इसको हम कंस्ट्रक्टर में देते हैं। जैसे मैंने बोला बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो पहले डेटा सबमिट करो, डेटा सबमिट होगा, वेरीफाई होगा तो ही अकाउंट ओपन होगा। बाद में डेटा मॉडिफाई करना है कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन मॉडिफाई योर डेटा विद द हेल्प ऑफ सेटर मेथड। एवरीबडी क्लियर दिस, प्लीज रिप्लाई। Okay, so just remember this approach where we have a 3 classes। कल मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा एंड विल क्रिएट अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हियर। उसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगा कल, ठीक है। सो टुमारो विल क्रिएट अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, ओके, एंड देन विल कंटिन्यू दिस, हाँ ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। तो जैसे ही मैंने एम्प्लॉय का क्लास, तो तुम्हें 4 एग्जाम्पल करने इस पैटर्न से। पहले था एम्प्लॉय का एग्जाम्पल, अभी मैंने बताया अकाउंट का एग्जांपल, फिर मैंने बोला था प्रोडक्ट का एग्जांपल, अजून एक दिला होता ना, हाँ बुक्स का एग्जांपल। तो ये 4 एग्जांपल करने यूजिंग दिस अप्रोच, तो तुम्हारा पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टूड? हेलो, क्लियर? प्लीज रिप्लाई। ओके, पण सगळ्यांना समजतंय ना नीट हे कन्सेप्ट काय शिकवली ते?